हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब बहुत खुश भी होंगे। व्हाट अ नाइट, व्हाट अ गेम वी हैड। द मेन इन ब्लू हैव डन इट। दे आर ऑफिशियली नाउ the ICC Champions Trophy winners in 2025, something that they have done after 12 years. So a big congratulations to Team India and a big congratulations to all the Indians around the world. आज के वीडियो में थोड़ा-सा जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा-सा एनालाइज़ किया था कि किस तरह से ये गेम शेप अप हो सकती है, दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, और थोड़ी-सी प्रेडिक्शन की थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ आई सेड इन माय वीडियो इट्स इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हू इज़ गोइंग टू विन, बट इंडिया डेफिनिटली हैज़ द एज। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने कुछ बातें कही थी जो आई वाज़ क्वाइट अमेज्ड एज़ आई वाज़ वाचिंग द गेम कि मोस्ट ऑफ दोज़ थिंग्स अनफोल्डेड। तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि हम जिन टॉपिक्स के बारे में हमने बात की, दैट्स हाउ द होल गेम शेप्ड अप। सो लेट्स टॉक अबाउट द हाइलाइट्स इन लाइट ऑफ व्हाट आई सेड इन माय वीडियो लास्ट नाइट। सबसे पहले मैंने कहा था कि स्पिनर्स विल प्ले अ की रोल, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्कड फॉर बोथ टीम्स, न्यूजीलैंड एज वेल एज इंडिया। लेकिन शुरू में जैसे हमने देखा, फर्स्ट 7 ओवर्स में दे केम विद एन इंटेंट, और फास्ट बॉलिंग को वो कुछ नहीं समझ रहे थे। दे एक्चुअली स्कोर्ड वेरी फास्ट एंड वेरी क्विकली, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ साइलेंस इन द स्टेडियम। बट जैसे ही मैं उनको बोलूंगा वंडरफुल वरुण एंड क्लेवर कुलदीप, जैसे ही वो आए, स्ट्रेट अवे दे हैड द इम्पैक्ट, और विद इन अ मैटर ऑफ 2 to I would say about 4 to 5 overs, by the 12th over, New Zealand were 3 down, so they had no answers to the variation and the straight bowling. Sometime Varun did, and all the complexity and the variations that Kuldeep brought. I don't think they had much answer to that, and they were really struggling with that. जैसे ही वो 3 विकेट्स गई, उसके बाद उनका मिडल ऑर्डर एक्सपोज होना शुरू हुआ। जीनियस जडेजा वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। इंडिया वाज इन कंप्लीट कंट्रोल। उसके बाद रोहित ने फिर से शामी को इंट्रोड्यूस किया, एंड ही हैड एन इमीडिएट इम्पैक्ट एज वेल, एंड ही टुक अ विकेट एज वेल, एंड फ्रॉम देयर न्यूजीलैंड वाज प्रीटी मच ट्राइंग टू मेक श्योर दैट दे प्लेड ऑल द 50 ओवर्स। तो जो प्रोजेक्टेड स्कोर था, हम इंटरनली आपस में भी एज अ फैमिली वी वर डिस्कसिंग, and I think it was around 250 जब हम सबकी consensus थी, and that's how things sort of ended for the New Zealand series. All in all, when India was bowling, one main thing that stood out, or two main things that stood out. First, Rohit's captaincy. किस टाइम पे किस बॉलर को किस बैट्समैन के अगेंस्ट खिलाना, ही वॉज पिक्चर परफेक्ट। उसका जो प्लानिंग थी, एक तो होती है आप प्लान करके आते हो ड्रेसिंग रूम में, और दूसरा होता है उसकी एक्सिक्यूशन। उसकी प्लानिंग और एक्सिक्यूशन वॉज सुपर, देयर वाज नो फॉल्ट इन दैट। और सेकंड, जो कुलदीप का इम्पैक्ट था, द मिनट ही केम एंड व्हाट ही डिड, ऑल्दो उससे पहले वरुण ने विकेट ली थी, लेकिन जो कुलदीप ने बैक टू बैक विकेट ली, उसके बाद न्यूजीलैंड वाज स्ट्रगलिंग फॉर अ कमबैक थ्रू आउट द गेम। अब बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की। कैप्टन रोहित लेड फ्रॉम द फ्रंट। आई थिंक ही हैड अ लॉट, he's got a lot of cricket left in him, there's no doubt about that, but लेकिन उसके साथ साथ जो लास्ट वर्ल्ड कप के, आई थिंक ही वाज अ बिट रॉब्ड ऑफ लास्ट वर्ल्ड कप। मुझे याद है उसकी अभी भी इंटरव्यू, जब उसने बोला कि मैं, जब वो फाइनल हारे इंडिया, उससे पहले एक भी गेम नहीं हारे थे वर्ल्ड कप की। फाइनल हारने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप एंड ही सेड टू हिज वाइफ दैट ही कांट बिलीव, ही थिंक्स, उसको अभी भी ये फील हो रहा था कि अभी फाइनल होना है। So that loss, he was thinking, he was dreaming. In other words, the point he was making was कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हमने final lose कर दिया. That was his conviction. So similarly, I think that he's actually paid back that debt to the nation as well as himself. कि वो absolute clean record in the champion, not even a single game was lost. And in this final, with his batting and his captaincy, when the India was bowling, and with his batting, he led from the front. I think it was a true captain's knock that actually set the scene for India, and he made sure that he stays there on the crease for a long time, even when wickets started to fall around him. एक चीज मैंने कल और इंडिया की टीम के बारे में कल प्रेडिक्ट किया था कि उनका जो टॉप ऑर्डर है, वेरी रिलायबल, कॉन्फिडेंट, और मिडल ऑर्डर भी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैव स्टार्टेड टू स्कोर। तो हमने वो भी देखा कि टॉप एंड मिडल दोनों ने मिलके अच्छी रिलायबल पार्टनरशिप्स की, with the exception of Kohli, but other than that, the whole unit performed in a very reliable and steady manner that also worked out well for India.
और तीसरी चीज जो मैंने कल शेयर की थी कि नेवर एवर राइट ऑफ न्यूजीलैंडर्स टिल द लास्ट मिनट और द लास्ट बॉल, एंड दे मेड श्योर दैट दे कीप इंडियन बैट्समैन इन चेक एंड ऑनेस्ट. तो उनकी जो बॉलिंग थी इट वाज क्वाइट मेजर्ड एज वेल, और उनके स्पिनर्स एंड ऑल दैट. तो ऐसा नहीं है कि इट वाज अ वन साइडेड गेम. वन ऑफ द थिंग्स दैट वी विश्ड फॉर, and I said in my last video as well, कि it should go all the way to the wire. Now obviously it didn't go all the way to the last ball, but it went to the 49th over, or within that time frame there was a runner ball required, so it was not just a walk in the park for Team India, and that's what we all wanted to see. We wanted to see a good contest which is not one-sided, and both teams has to fight for it. And obviously we all wanted and praying that India wins, which they did at the end, like, we wanted a good context as well. So that is what happened, and I think credit to New Zealand bowlers as well, that they bowled quite well and took the game all the way to the 49th over. So where from here for Team India? जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में आई थी और उन्होंने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज हारे थे, there was a lot of criticism. I don't think that much of criticism was required or they deserved it, लेकिन they had a lot of criticism. तो मैंने उस टाइम भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज check it out. I strongly believe that Team India is in very good hands, management-wise, player-wise, support staff, the whole lot. It's a professional unit which has a lot of succession plan, and the players who are playing never ever take anything for granted. उनको पता है they are as good as their last game. उनको पता है they are playing for a cricket obsessed nation, और उनको पता है losing is not an option. But at the same time, the reality is you can't win every game, you can't win every tournament. So credit to them for holding on to the expectations of 1.24 or whatever billions we are in the world, for meeting those or living up to those expectations. But overall, I would say it's a fantastic unit that is currently playing. It's got lots of options. हमने ये सीरीज बिना बुमराह के जीती है. अगर बुमराह नहीं है तो शामी comes and deliver. अगर शामी अवेलेबल नहीं है, there will be someone else. There's bench strength, there is succession plan, और जिस तरह की circumstances हैं, जिस तरह की conditions हैं, हमारे पास उस तरह के players हैं. So again, I would say you can't win every tournament, you can't win every game, and we should not make our heroes zeros just in a matter of time, or by losing one game or one series. It's a unit that we should all be proud of. It took us decades to build this type of Indian cricket that we are seeing today, and we have learned a lot from Australia and other cricketing nations. So we play hard, and the guys are truly professional. वो किसी तरह की कोई, and they play as a unit as well. They back each other. There's no politics. There's nothing of that sort. So I think that the future of the Team India is extremely bright, and we have a lot to look forward to. The only thing I would like to share is that when we lose, I think we should support them equally, which most of India does. ऐसा नहीं है कि we start bagging them right away, but there are some parts of media and some ex-players who can be pretty harsh, and I think ex-players का मैं समझ सकता हूँ, because they are still very competitive. वो अपने playing days को याद करते हैं, and they just hate losing, which I can understand for any sports person. That's how it is. On that note, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा जिसमें आप सनी गवास्कर जी को देखिए, वो किस तरह से डांस कर रहे हैं and celebrating the win. So that goes to show, once a cricketer, always a cricketer. On that note, thank you for watching. Once again, congratulations to whole of India and Team India. Onwards and upwards. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो do share it with others, and next time I'll meet you with another topic. Until then, be happy, be good, and take care.